Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhir and welcome you all on today's class. And now we are moving towards the exercise 8.2. Dear students, here we have to understand about the clock and we have to write the time in two ways. Okay, first of all, I want to tell you one thing, and that is the exercise is available on page number 138. Page number is 138. So everyone please open the page number 138 of your book. आपके book का page number 138 निकालो. And on the page number 138 there is a exercise 8.2. Exercise कौन सा है? 8.2. In the exercise 8.2 we have to observe the clock. Okay, what we have to do? We have to observe the clock. We have to recognize the time. What is the exact time is shown in that clock. उस घड़ी में कितना टाइम हुआ है, and then we have to write that time जो भी टाइम हुआ है in two ways, दो तरीके से उसको लिखना है. ठीक है? What is that? Write the time in two ways. So in this exercise we have first step is, what is the first step? First step is you have to observe the clock carefully. Observe the clock carefully, then recognize what is the exact time shown in that clock, and then we have to write, that time in two ways. Okay, so dear students, as you can see this, I have drawn here three clocks. मैंने तीन घड़ी बनाई है. That is the first question which is already solved in your book. ये बुक में पहले से सॉल्व किया हुआ है, बट फिर भी मैंने बनाया है. ठीक है, सो इसको भी पढ़ेंगे. That is a second one and that is the third one. Okay, so everyone look front, don't write. कुछ लिखना अभी नहीं है. First of all you have to observe whatever I am telling you. Okay, in the first clock, this is the first clock, and in this first clock there are two hands, दो hands है. It is a minute hand. We have already learned that the big hand is our minute hand and the smaller hand is our hand. That is our hand. That is our hand. Okay. Now first of all we have to observe this clock. Where the hour hand is? The hour hand is in between the 4 and 5. 4 या 5 के कहीं तो भी बीच में है. Okay. And the minute hand is exactly on 3. It is exactly on 3. Okay. So 5 बज गए हैं क्या? हाँ. It is 5 o'clock. No, it is not a 5 o'clock. अभी तक आपका hour hand 5 को क्रॉस नहीं किया है. It just crossed 4. So what is the time? It is 4 o'clock and extra time is there. Listen dear students, this is a 15-minute extra after the 4 o'clock. है ना? 4 बज कब बजते हैं? When the hour hand is on 4, is at 4 and the minute hand is on 12. But क्या हुआ है? The minute hand is what? Minute hand is travel. Minute hand ने क्या किया? 15 minutes travel कर लिया है. This part is traveled by the minute hand. Okay. So what is that? That is a quarter part. है ना? देखा क्या आपने clock को? That is the clock, and in the clock the minute hand is travel a quarter part travel कर लिया. ठीक है? And we know that is a 5 minute, this is a 10 minutes, and this is what? That is a 15 minute. That is a 15 minute. So dear students, now we know that after the 4 o'clock the minute hand traveled. Minute hand moves up to the 15 minutes. Yes, 15 minute और हो चुका है उसमें, है ना? So we can write the time in two ways. दो तरीके से टाइम लिखेंगे. First of all we will write hours and minute. 4 hours, 4 hours, and then we will write the two dot. वो दो dot क्या करता है? These two dots exactly separating the minutes and hour, है ना? So 4 hours and how many minutes are there? 15 minutes. That is the first way to write. ये पहला तरीका है लिखने का. Now the second तरीका, that means the second way to write is, उसमें भी दो तरीके अच्छे से देखो कैसे लिखना है. Now what is that? 15. Okay. Now the minute hand is where? Minute hand is towards the, that is your minute hand. Okay. The minute hand is towards the left hand side or right hand side.
It is towards the right hand side of the clock. Yes, घड़ी के right hand side में है. And we know that the area, that is the portion towards the right hand side is past. Past वाला area है. And जब भी हम लोग past वाला क्या करते हैं, past वाले में पीछे वाला नंबर लेते हैं, है ना? So here, how many minutes are passed after 4 o'clock? How many minutes are passed? Past का मतलब हो गया, गया भैया. So here is 15 minutes are passed after 4 o'clock. So how can we write it? We will write 15 minutes. 15 minutes past. P-A-S-T. Past 4. 15 minutes past 4. बट अभी तक यहाँ दुनिया खत्म नहीं हुई. अगेन देर इज अ वन वे टू राइट. एक और तरीका है. बिकॉज वी नो दैट अ मिनट हैंड इज जस्ट ट्रेवल द क्वार्टर पार्ट. यस, सो इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स, 15 मिनट्स की जगह पर क्या लिख सकते हो? क्वार्टर, है ना? यस ना, दिस इज अ 15 मिनट and this 15 minute is exactly making the quarter part of a clock. That's why we will write half. Oh, sorry, not half. We will write quarter. Okay. Quarter past 4. Quarter past 4. So exactly there is not two way, there is a three way to write. 4 hours, 15 minutes, 15 minutes past 4. If you want to write in minutes, you can write 15 minutes past 4. But there is another way, which is a special way to write, that is a quarter past 4. So in this way, you can write the time in the clock. Okay. So इसी बात पे चलते हैं सेकंड की ओर. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. एंड द सेकंड क्वेश्चन में जो क्लॉक है वो ये वाली क्लॉक है. एंड नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द क्लॉक. ऑब्जर्व करो भरा फटाफट से. एंड व्हेन यू विल ऑब्जर्व द क्लॉक यू कैन सी दैट द आवर हैंड इज इन बिटवीन द 2 and 3. आपका आवर हैंड है 2 और 3 के बीच में. ओके, सो and the minute hand is on 7. एक बात बताओ भरा मुझे, where is the minute hand? Minute hand is towards the, ये वाला past है. हाँ, ये घड़ी को भी छोड़ दो, इधर वाला पकड़ो. हाँ, so that is what? That is a past area and that is 2 area. So towards the, listen here, look front everyone. This is a clock and clock is divided into 2 parts. It is a right hand side. This is a right hand side and that is the left hand side. Okay, so right hand side वाला past है, इधर वाला 2 है, 2 वाले एरिया में है. Now you can see that the minute hand is where? Minute hand is towards the left hand side. And we know that if the minute hand is towards the left hand side, अब past वाला खेल खत्म. Now we are moving towards the next number. After the some time it will be 3 o'clock. थोड़ी देर बाद में 3 बजने वाला है. हाँ, तो अभी हम लोग बीते पुरानी कल की बात नहीं करेंगे. We will talk about the which time is coming. Okay, after a few minutes. So first of all what we have to do? First of all we will write the time. Easy वाला लिखो पहले, like a digital clock. So what is the time? The hour hand is in between the 2 and 3. That means 2 o'clock is happened. 2 बज गया. लेकिन now 3 o'clock is not happened yet. अभी तक के 3 बजा नहीं है. So that is what? 2 बज के 2 hours and then we will write the 2 dots which is separating exactly the hours and minutes, जो कि क्या करने वाले हैं? मिनट और आवर्स को अलग अलग करने वाले हैं. ठीक है. एंड ये 7 कितने मिनट पे है भाई? हैं, जरा देखो बरा. ओके, जरा देखो तो. दिस इज 5, 10, 15, 20 प्लस 5, 25, 30 एंड 35. हाँ जी, तो आपका जो मिनट हैंड है इट इज ऑन 35 मिनट्स एंड दैट्स व्हाई वी विल राइट 2 hours 35 मिनट एंड दैट इज द फर्स्ट वे टू राइट द टाइम. दूसरा वाला क्या करेंगे? दूसरा वाला अभी हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे. 35 मिनट पास्ट 2. पास्ट तो नहीं लिख सकते ना भाई. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज द मिनट हैंड इज नॉट टुवर्ड्स द पास्ट. ये तो पास्ट से है ही नहीं पास्ट में. इट इज टुवर्ड्स द 2. द मिनट हैंड इज इन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द क्लॉक. आपका मिनट हैंड लेफ्ट पोर्शन में जा चुका है.
बीते पुरानी बातें गई, अब आएगा आने वाला कल. That means what? Now we will talk about the next time. Okay. So what we have to do? We will write how many minutes are away, how many minutes are remaining to next time. मैं फिर से बोलता हूँ. How many minutes are left? How many minutes are left? कितना बचा है? Next number को time आने में 3 o'clock को कितना time बचा है? So let's count. And we know that there is a 5 minutes in between the two numbers. हर दो नंबर के बीच में 5 लाइन है. 5 plus 5 10 plus 5 15 20 and 25. So dear students, here the 25 minutes are left. That means 25 minutes बचा है for the 3 o'clock. That's why we will write here. देखो ये जो बचे वाली बात है ना, बचा, whatever the leftover we will talk in the case of if the minute hand is towards the left hand side. Okay, so we will write here 25 minutes 2. अब जब हम लोगों ने 2 लगा दिया, 2 मतलब आने वाला. So what is the next time? What is the next? R will be, that is 3. So we will write here 3. It is the 25 minutes to 3. That means after the 25 minutes there will be a 3 o'clock. 25 मिनट के बाद 3 बज जाएगा. खत्म कहानी. Okay. Now let's move towards the jumbo घड़ी. That means the big clock. ठीक है, अब उसमें मजा आने वाला है. Let's move towards the third question. And in this third question, that is a special time. और special time है. क्यों? Because the minute hand is on 9. देखो special time कब होता है? When the minute hand is on 12, when the minute hand is on 3, when the minute hand is on 6, and when the minute hand is on 9. ये जो भाई साहब ये जो numbers है ना, there are 4 numbers. Here, if the minute hand is on 12, 3, 6 and 9, तो हम हमेशा टाइम को 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से लिख सकते हैं. फिर से बोलता हूँ. If the minute hand is on 9, 12, 3 and 6, in this case we can write the time in 3 ways. देखो यहाँ पे मैंने 3 तरीके से लिखा था. ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन भी आ जाता है, फिर बीच में टपक जाता है. हाँ, so here what is the time? The time is 6 hours. 6 hours इधर लिख रहा हूं मैं. हाँ, 6 hours 1 minute. It is visible in camera or not? First of all, let me see. पता चला मैं पढ़ा रहा और दिख ही नहीं रहा. हाँ, ठीक है. Okay. Now here, what is the time? The time is 6 hours. 6 घंटा. After the 6 hours, how many minutes are done? कितने मिनट हो चुके हैं? Let's count. This is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. उसके बाद 40. फिर उसके बाद 45. So it is a 6 hours 45 minutes. So the time is 45 minutes. That means 6 hours 45 minutes. This is the first way to write the time, and it is very easy. Okay, you have to just observe the clock and you can write the time 6:45. Okay, so now you can see here the minute hand is on 9. Okay, and when the minute hand is on 9, it is the time is 45 minutes. And you can see, अरे कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में ना भैया, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो कौन सा साइड में? 2 वाले साइड में. 2 है ना. सो जब हमारा मिनट हैंड 2 वाले साइड में होता है, इफ द मिनट हैंड इज फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मींस इन द 2 पोर्शन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टास्क. उस समय हम लोग आने वाले टाइम की बात करते हैं. सो हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट ओवर? How many minutes are left over to the next hour? अगले hour के लिए, अगले घंटे के लिए कितना टाइम बचा है? 15 minutes. Okay? You can see here. I'm making. Look at everyone front. I'm making. Okay. क्या लिख रहा है? Water. Yes. It means a cotton, my dear. यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 10 बाबा थे, इधर 11, 12.
Okay, so you want it, have to see it is available. Yes, it is visible in camera. Hey, very good. क्या बात है, दिख रहा है? ठीक है. Okay. So now here 15 minutes are left. 5 plus 5 10 plus 5 15. So 15 minutes are left to next hour. So हम लोग लिखेंगे next hour कौन सा है? Next hour and के बाद वाला नंबर 6 पे तो घूम के आ गया. अब घूमने जाएगा 7 पे. Now we will go on 7. That means after the 15 minutes, the time will be 7 o'clock. 15 बज जाएंगे. तो कैलकुलेट लिखेंगे 15 minutes to 15 minutes to. अब लग गया है 2. In the case of 2, we will talk about the next hour, which is 7. अच्छा, ये जगह नहीं है. बाद में 15 minutes to 15 minutes to 7. And yes, student, this 15 minute is very special minute, because if the 15 minutes is left over, or the 15 minutes are passed, or 15 minutes are passed. जब 15 मिनट बचा का किस्सा आता है ना, तो एक क्वार्टर लगा देगा, क्वार्टर बन गया. And now we can write the time in one more way. एक और तरीके से लिख सकते हैं. And what is that? And that is quarter to 7. और यहाँ क्वार्टर पास्ट में था, इंडियन हैंड पास्ट वाले जाने था. Now here the hand is turn on. It is turned towards the 2 side. तो बस हो गया. टाइम खत्म. लिखना बस पहले. Okay, what we have to write? We have to write quarter. Okay, quarter to 7. I hope you understand. So my dear students, here the first, second and third question is explained completely, and now you have to solve rest of the question yourself. I will tell you here, don't worry. But बाकी के solve करने का try करो, and I am sending the video back to back. So dear students, I hope you understand. And you have to note down this 3 clock in your notebook also. इसको notebook में भी लिख लो. Okay. And if you want to make a circle, you can use a bangle, है ना, चूड़ी घर में जो होती है bangle, or you can use a coin. Okay. So thank you so much for watching the video up to till now, and have a good day and bye bye.